had your induction? Yes, sir. I had one with Tejasri. Okay, but you've not had a departmental or team Yes, induction, yes, no? yes. You know which team you're part of? Yes, sir. So fundraising department and Wongster marketing and SPM. Right, right. And SPM कौन सी टीम के अंदर आता है? Engagement. Right. Okay. Okay, full marks. Okay. Okay, and और कौन-कौन है SPM में? Abhi, I don't know that, sir. एक ये पिंक में P में है प्रियंका. P पिंक प्रियंका. Okay. 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 और एक J Jayesh. He's just going to be back. Okay. All right. And I did congratulate this team for having done a fabulous job for what you guys did on Sunday. Okay. And how are the teams right now? How many members in every team? So 9 members each. 9 members each. Yes, sir. So total of 36. Yes, sir. Right now. Have you let go of some people? So 40 plus थे ना 40 41 थे 3-4 लोग छोड़ निकाल दिए क्या हमने? yes, sir. छोड़ गए? जब हमने मोटिवेशन ट्रैकर देखा था लाइक उनसे पूछा था कि आएंगे उनका सिचुएशन क्या है क्या आगे जाके क्या पार्टिसिपेशन रहेगा तो कुछ उस टाइम पे निकले थे. All right. But these 36 are kind of final. Yes, sir. Right now. All right. And now how do you feel about the captains? Who are the four mentors? Swati, Moksha, Swastik, and who's the fourth one? Anshu. Yes. Right. How do you guys feel about the captains? Talking about mine, he's enthusiastic. Like he like to. Naam batao. Sir, Naman. Right. Naman is very decent. Yes, which grade is he in? Sir, he's in 11th. Okay. How do you feel about your captain, Swati? Swati is frozen. Moksha, your captain? Sir, Lovish. How do you feel about him? Sir, he's good. Balanced? Motivate कर लेगा team को? Yes, sir. Definitely. So he was the Anshu, one was Anshu, your captain? Aniket. Right. Got it. Swati, your captain? Her name is Heer, sir. Right. Okay. So what is your way forward? Who is your project manager? Tejasri. We have removed the project manager for some of them. Yeah, for engagement, I think we need a project manager. For engagement activities, that will be, like it should be the same person who's there for design, for gamification. Do we have a gamification project manager? No, then it cannot be the same because I don't want somebody from within the team to be the project manager. Maybe for design as of now, Akshaya, sir. Sir, either we can do one thing. I can take some other department and give gamification. Yeah, we may need to switch that. We have gamification and engagement ka common project manager. And so Swastik should switch with somebody else so that that person can take on both. I'll talk about it in today's Kriya. Internally team में discuss करके ना Swastik आप ही बताओ rather than Tejasri picking it up. Yes, sir. Okay, Tejasri, where is Nikita? Is she joining or not? I called her, sir, but not responding. Okay, so what are your plans now? Have you discussed? Are you having your internal meetings? Yes, sir. Actually, for this week, we are doing meetups, and first was pool, which was held on it was held yesterday. It was like decent, but
we need to push Wongsters a little bit so The that they can engage with it. participation was a little low, sir, but overall, I guess from each group, 3 to 4 of them participated. Oh, that's good. If that's what happened, then that is good. In the informal this thing. Okay. और बताओ, tell me more about what you're thinking of doing. So So बाकी अभी we are planning to have a town hall with the end of this month. So you don't have a date right now? Sir, not a like a definite date, but maybe 30th October, Should you not do it next month, Moksha? 30th September, sir. Should you not do it next month? So we can do it next month. You can do it But on 2nd October, sir, if possible. But एक ही time पे करो. Why I'm saying to delay this a little bit is because they have just come in. And और engagement भी अभी आप एकदम से हाई होगा, उसके बीच में ही आप टाउन हॉल अभी अभी कर देंगे तो ओवर ना हो जाए. And then you could fix the date and everything, that people settle down a little bit, let them understand what this means. नहीं तो टाउन हॉल का ज्यादा कोई मतलब नहीं रहेगा. What do you say, Moksha? अच्छा, तुम्हारा टीएल कौन है एंगेजमेंट टीम का? अभी नहीं बनाया. अच्छा, हाँ, लेकिन तब तो डीएल है, पर वो टीएल भी है, हो सकती है. टीएल को बुलाओ यार, कहाँ चलेगी निकिता? तो छोड़ो, वो कोशिश कर रही है. Just drop a message also in the main group you're waiting. Maybe she's got some problem because otherwise she was here, she just left after some of you joined. Okay, tell me guys, so town hall next week, next month करते हैं? yes, I mean, I wanted TL to make a decision, but you guys do it collectively. sir, I think it is the right idea because अभी 27 तक एग्जाम चलेंगे अभी Wongsters के. तो फिर हाँ. अगर एक बार फ्री हो जाएंगे उधर से भी तो बाकी रेस्ट वी कैन डिसाइड. और क्या पूछ रहे हो? सर फॉर दिस वीक अभी वेडनेसडे को एक क्विज रखना है, नॉन मीटर, एंड फ्राइडे को एक डिबेट सोच रहे हैं. आइटनरी भेज दी है ग्रुप में पहले ही, तो वो सब भी अवेयर है, बाकी हम रिमाइंडर दे देंगे. ओके, मैं एक सजेशन दूं यस कि ये पूरी टीम को ना इसमें बिजी मत करो कि अभी ये गेम खेलनी है, अभी वो करना है, ये करना है. आप लोगों को एक तो जैसे हम एचआर में करते हैं ना, एंगेजमेंट टीम को टोटली क्या क्या करना है उसको फिर डिवाइड कर दें कि एक बंदा ये चीज को ड्राइव करे, दूसरा बंदा ये चीज को ड्राइव करे, और फिर वो मतलब करे सब लोग, लेकिन ड्राइव एक बंदा कर रहा है. सर, एक्चुअली हम करते क्या है, जैसे भी सर वैसे ही होता है, लाइक Yes, वन sir. पर्सन ओनली ड्राइव्स इट. ठीक है, तो ये क्विजेस वाले के बारे में बात करना चाह रहा हूँ निकिता. अच्छा, एक तो अभी हमने एक डिसीजन लिया है कि टाउन हॉल इस मंथ पे नहीं करेंगे, नेक्स्ट मंथ में करेंगे. हाँ हाँ सर, दैट इज हाँ. ओनली लॉजिकल. एवरीबडी इज हैविंग एग्जाम्स टिल 30. अच्छा, अब हम दूसरी बात ये कर रहे हैं कि जैसे क्विजेस वगैरह आप ये बता रहे हैं कि हम इमीडिएटली सोच रहे हैं, तो ये कौन ड्राइव कर रहा है क्विजेस के लिए? किसको रिस्पॉन्सिबल कर रहे हो आप, या रोटेशन पे करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो? सर रोटेशन ही है, लाइक 3 एक्टिविटीज के लिए ईच वन मेंटोर वो प्लान करता है और एग्जीक्यूट सारे मेंटोर्स अपने अपने हाउसेस में करते हैं. मैं चाह रहा था एसपीएम्स को भी इन चीजों में किस तरह से इन्वॉल्व रखी, एंगेजमेंट चीजों में भी. पर एसपीएम्स का ज्यादा रोल प्रोजेक्ट मैनेज करने का ही होता है, ऑर्केस्ट्रेट करने का होता है. तो थोड़ा उनको अभी हम मतलब लेट देम लिसन इन, और फिर हम कोई इन्वॉल्व करें फिर इसमें जो एंगेजमेंट की रेगुलर चीजें हो रही हैं. या सर. और क्या सोच रहे हो?
सर अभी के लिए यही कि न्यू हाउस का कंसिस्टेंसी ही फोकस है, लाइक अ बैलेंस, लाइक एग्जाम से वो रिटर्न करे, नॉन मीटअप में पार्टिसिपेट करे, एक्टिव एक्टिव रहे। दिस इज आवर एजेंडा। यार मैं ना एक चीज पे वापस आप लोग का अटेंशन लाना चाह रहा हूँ कि without realizing we are again getting back a little bit into a sense of desperation. क्यों किस तरह से को पार्टिसिपेट कराना है, यू नो, हमारे वो मीटअप में आ जाएं और यू नो को हमें कुछ करना है करने के लिए, तो ये एक सेंस बन रहा है इन चीजों से। ओके सर। हमें करना ये है कि आ, हमें इसको ठीक से पकड़ना है। हमें एक्चुअली हर एक बंदे को जानना है, हमें समझना है कि वो क्या रहा है, और ये चीजें करनी है ऑफ कोर्स, लेकिन हमें इन चीजों में अपने माइंड शेयर को यहाँ नहीं लगाना है। यार अच्छी क्विज कंडक्ट करते हैं, अच्छा मजा कराते हैं, अच्छा मेरे को मजा आ रहा है मजा कराने में, यू नो, डू दैट, बट always remember the intent is to listen to people, you know. In the quizzes also become more meaningful. Have you really understood about it, you know? Are they interested to participate? Do we know a good reason why they didn't participate? Are we creating enough FOMO in other people, you know, so that if they had a choice, little bit of a choice, they would be here, they would have been here. What has been the kind of impact of every you know, interaction on people? Do they carry a better image, and do they find it more valuable? Are we creating that balance of fun and value? Are we doing our processes right? Is the main thing. या सर। हम वापस मतलब ऐसे बिजी ना हो जाए। और लास्ट टाइम हमने ये रोक दिया था, क्या रोक दिया था हमने? गेटिंग टू नो द members also. Yeah. Okay. So Sir, our 80% focus, I feel, you know, should be on that. Yes. Swati. yes, sir. As an organization, how are we measuring impact, sir, apart from participation? So the impact for us is the influence that we are able to create. I mean, two stages. One is how much have they sort of you know, understood this better, so that their own understanding of these issues has become deeper. And second is what kind of influence are they causing on the society? You know, whether it is in the form of certain number of these posts that they create, which in turn gets reaction from people, or in the number of events that we do where they get a chance to interact with the rest of the world. So our impact will be on both these stages. So they are able to understand things better, and they are able to influence the world better. Yes, sir. So we do have processes like strategic processes to measure or We are defining all that. That's exactly what Priyanka and Aditya were doing. Okay, so we are working backwards from there. So we have defined organization level dashboards, strategy, and now we've gone back to defining the individual KRAs, you know, departmental KRAs, how that aligns with the organizational processes. So it's work in progress, I would say. But yeah, that's where the clarity is there. But you know what it really entails in terms of, because advocacy is such a thing that measurement of the impact of advocacy is not simple. Okay, but what we have said is that we will set our own goals. That in some time we want to have more number of posts happening. Sometimes you want more virality of those posts happening, or fewer posts. You know, so it'll be a combination of the two.
Nitin ji, I have a small question, not to you. 5-8, there is a text from Nikita saying, guys, where are you all on the Vong engagement team? क्या भाई किसी की शादी है, आप लोगों को न्योता देने की जरूरत है? You people don't know you have a review meeting. अभी ले लिया इनका क्लास, उसके लिए भी नहीं, क्योंकि तो पहले तो उसने डील नहीं करा नहीं, है। इनका क्लास तो लेना ही लेना है। 2 हफ्ते से मुझे रिमाइंडर ही नहीं आया है इनके इंटरनल मीटिंग का। Ma'am, regarding that, I myself was facing some problems regarding the team only. मैंने सर से किया वो डिस्कस, तो अब मुझसे जाके क्यों नहीं किया? सॉरी मैम। डूड यार निकिता, आप रोज का टू डू लिखते हो क्या? संगीता मैम से डांट खाना है? नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं है। But there was a like huge mess. I'll tell you Of course after there the was a mess, I meeting. can see. Nitin ji, next time if these people are more than 5 minutes late for the meeting, you please suspend the meeting and then you leave it to me. जिंदगी में कभी दोबारा ये लोग कहीं पर भी 1 मिनट लेट नहीं पहुंचेंगे, ये मैं इनको सिखाऊंगी। ओके चलो, अब बताओ मेरे को, we were talking about हम जो फोकस कर रहे हैं ऑन एक्टिविटीज, उससे ज्यादा फोकस किस पे रखना है? 80% फोकस शुड बी ऑन The monsters. and impact. knowing the monsters for now. Okay, then it will shift. Then 80% doesn't need to be 80%, that may remain 30% going forward. But now the focus 80% should be knowing your monsters. Okay, how do we get to know the monsters? I mean, while you do these activities, I'm saying don't get the reason why you're doing these quizzes and all is you think you are doing it so that you build a momentum so that they join, right? Yes. पर वो गलती है, क्योंकि आपके क्विजेस की वजह से नहीं आएंगे वो, इस वजह से आएंगे अगर आप उनके रियलिटीज के साथ में जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उसके साथ में आपने डिजाइन करके रखा होगा, आपको समझ में आएगा कि वो क्या कर रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, किस वजह से नहीं आ रहे हैं। क्विजेस एक एड ऑन फन है जो एक Yeah. तरह से, और इट आल्सो हेल्प्स द प्रोडक्ट गाइज कि भाई एक कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, इट्स लाइक अ प्री engagement activity. You're helping them rather than helping yourself. Okay, I would rather कि ये जो प्री इवेंट क्विजेस वगैरह भी हैं, ये अगर एसपीएम करे तो और भी बेटर है। निकिता, think about it. या सर, पहले तो ये वीक के लिए एसपीएम को देखने देते हैं, like how we are running it, and slow transition अगर होगा ना, then only Wongsters will reply. अभी they are comfortable with mentors ना, तो फिर वो उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। राइट, ठीक है। तो अब हम कैसे वो डेवलप करें बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर टीम्स? सो पहले तो 1-to-1 कॉन्वर्जेशन वॉन्गस्टर्स के साथ, और वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। लाइक ऐसे नहीं कि मंथ में सिर्फ एक बार ओनली वी आर टॉकिंग टू इंडिविजुअल वॉन्गस्टर, वो ऐसे 2-3 बार या फिर हर वीक में एक मतलब बार। महीने में 4 बार से बात कह रही हूँ, हर हफ्ते में एक बार हर वंश से बात होना चाहिए। या लाइक इवन नॉट फिक्स्ड। निकिता बेटा, जब आप सोच रहे हो, बात कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिस पॉइंट इज रॉन्ग, बट आप जब बात कर रहे हो 2 चीजों को याद रखना है, एक फीजिबिलिटी, दूसरा स्केलेबिलिटी। कल को 4 मॉन्स्टर ज्यादा आएंगे तो क्या ये सिस्टम चलेगा? इट्स ओके कैन यू कि आप मुझे बोले कि मैम ये सिस्टम सिर्फ 30 डेज के लिए है या अभी तक के लिए है, जब मॉन्स्टर बढ़ेंगे तो हम बदल देंगे, दैट्स ओके, बट यू नीड टू हैव द क्लैरिटी अबाउट इट। सेकेंडली, आप मुझे फीजिबिलिटी बताओगे। फीजिबिलिटी सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वॉन्गस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके सर पे 10 चीजें, 4 बार आप उसको महीने में चक 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 कॉल करोगे तो वो रिस्पॉन्ड करेगा या वो इरिटेट होगा, ये भी सोचो। मैं ये नहीं कह रही वो इरिटेट होगा, मैं ये भी नहीं कह रही कि वो रिस्पॉन्ड करेगा, मैं कह रही हूँ ऐसा सोचिए।
या मैम। आपको एक चीज याद कराऊं निकिता, हाँ हाँ एचआर में हमने क्या किया हुआ है, हाँ सर। क्या किया हुआ याद करो, द मोटिवेशन ट्रैकिंग बाय द क्या डेट्स, नो? कैसे करते हो? द वे लाइक वी टॉक वैसे ही सर, लाइक आई। पीरियोडिसिटी पूछ रहा हूँ, हाँ वो पता है सर, वैसे क्या कर है? सकते हैं। वी डू इट ट्वाइस इन मंथ। इट्स नॉट ट्वाइस इन अ मंथ। आपको पता है स्वाति क्या है पीरियोडिसिटी मोटिवेशन ट्रैकिंग की एचआर में? नहीं सर। ओके, सो ऑर्डिनरी वंस इन अ मंथ है, और जो न्यू जॉइनीज हैं इंडक्शन पीरियड में, बड़ी बड़ी पीरियड में, उसमें वंस इन अ वीक है। क्या? ओके, जब जरूरत है, यू नो, बड़ी पीरियड में उनको कंफर्ट वगैरह देखने के लिए, वो सब करने के लिए। सो यू योर गाइस आर neither new to Wong, nor are they like completely settled. There's somewhere in between. I'd like to recommend maybe once in 2 weeks to start with, then go on to once a month. ओके But the important thing is that it's not just how are you doing this, that. Since the way motivation tracking is done, you actually understand some aspects and are ready to explore that. And we train everybody, all the mentors also, to be able to generally understand where they're at and discuss also between each other. Oh, I've understood. Oh, this is what it is. Oh, the more sharing there is between each one of you, the better you're going to be able to do that. हाँ सर, गेटिंग द आइडिया। एक्चुअली ऐसे ही हम डिस्कस करते हैं, but with this new perspective, we'll put more new insights. Or my suggestion to you all is that before you start to talk to each other, talk to them, have their profiles completely ready with you, and even the gaps that you want to fill in. And this is like a public profile, and there could be like a personal file and a public profile. Even the public profile, there is some information that they have given as a CV, which is available. Then there is some available as a past record, to you. Parallelly, we also have to strengthen that system of what kind of records are we maintaining about it. That's why the small team we are happy with right now, so that we can strengthen the entire system. Each one of the 9 monsters that you have, do you know, from their school subjects, interests, hobbies, and how they performed, and what kind of points they've gotten, and what kind of things that they've already participated in before you talk to them. And in some cases, maybe the information should have been there, is not there. Can you ask them and put that in for a one-time update with you? Which could also be useful for otherwise profiling them, कि भाई मैं इसको किस type की activities में हमको represent करवाएं. Maybe he's also better for this community. Maybe they haven't participated. We should also help the captain to understand. So, how do you even help your captains more? What are you expecting your captains to do? What's going to be the difference between your role and the captain's role in the team? Sir, our captain should increase the motivation between the team and like motivate other youngsters to participate more and make a friendly environment in the house itself. भाई दोनों में क्या फर्क होगा, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो और वो क्या कर रहे हैं? दोनों का एक ही रोल है कि अलग अलग रोल है? सर हम लोगों को सारे वॉन्गस्टर्स को पर्सनली सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना, उनके साथ कनेक्शन बना के रखना कंपलसरी है लाइक। और कैप्टन को ये है कि उनको एज अ मेंटर नहीं, बट उनको एज उन सबके साथ
एज अ लीडर लेके चलना है टीम को, साथ में सिर्फ टीम को, फॉर टीम स्पिरिट। लीडर का मतलब? सर, एज अ डिफरेंस बिटवीन अ कोच एंड अ कैप्टन हाँ, इन क्या स्पोर्ट्स। डिफरेंस होगा? सर, कोच को सबको सिखाना है और सबको टीम बनानी है, बट कैप्टन को है कि वो अगर किसी चीज में एग्री नहीं भी कर रहे हैं तो वो कोच के खिलाफ भी जा सकते हैं, बट उनमें सब में आपस में कोऑर्डिनेशन और यूनिटी होनी चाहिए। अच्छा, ये ऐसा करते हो तुम? अपने कोच के खिलाफ भी चले जाते हो और कैप्टन बन के बगावत करते हो? यस सर, कर सकते हैं। कोच ने खुद कहा है कि अगर मेरे खिलाफ भी हो तब भी चलेगा, बट आपस में सबको यूनिटी बना के रखनी है। राइट, तो क्योंकि वो कोच चाह रहा है कि यूनिटी हो, टीम यूनिटी हो। ओके, यहाँ पे सेम नहीं होगा, बगावत मत करवाना अपने खिलाफ। बट ओके, गुड वन। आई थिंक द एनालिसिस दैट यू गिवन इज ब्यूटीफुल, कोच और कैप्टन। बट उसमें भी जो रिलेटिव रोल होगा, इट विल नॉट प्रोबेबली बी द सेम इट हैपेंस इन अ स्पोर्ट्स टीम। Some learnings from there, some learnings from other places. So for one, the coach has that maturity to understand where are you coming from, which the captain will not be able to understand. Okay, why he's saying what he's saying, and the captain will be the one who's going to create that spirit of winning in the name of the house, and doing better, and maybe sometimes helping other people also. So playing that role of telling you some of the things which are happening internally which you don't know of. Okay, but most importantly, that the difference is going to be that while you are going to pretend that your house wins, you have to pretend that you want your house to win. You shouldn't care. You have to care that the whole engagement team wins, the participation happens maximum. Okay, your captains have to really be concerned that the house must win. House Yes, should sir. win, and the team should be together, and bonding, and but sometimes the people may not like the captain, and because of which their participation may go down. You have to be careful about that. Okay, you should never be disliked by anybody. Captain ho sakta hai, somebody may like him, may not like him, may say that ye kaisa captain bana diya aapne. Those people can also come to you directly and say, rotation pe hai captain, whatever. And captain should not be there for more than maybe 4 months, but 2 months ka दो ड्यूरेशन दे दो, एक टाइम लिमिटेड करो, डोंट मेक देम indefinite captains, something like that. 2 months के 3 terms या 2 terms, you decide how you want to do it. Okay, so have your own time bound getting to know them while you're and because the most important value you're going to be able to add is not कि आपने प्री इवेंट क्विज़ेस कराई कि नहीं कराई. वो क्विज़ेस तो मार्केटिंग टीम के इंटरेस्ट में है कि आप कराओ. But the maximum role that you have to play is you can give them a good reason. What's really happening? Are they going to come? How many people are going to turn up? And you can, you already know what's going to happen. Is this particular event going to be? Is this going to be good in terms of participation or not so good? And not just participation, how are people going to like it? And people may not like it, but it's going to be beneficial for them. So you've got to understand not just how it looks, but how it actually is. Okay. Okay, so superficial game mat khelo. That's all I'm trying to say. हाँ सर, हाँ सर. And yeah. So anything else you guys want to ask? Guys,
सर इन 19 I guess it happens कि unpaid थोड़ा ज्यादा लोग ओवर हो जाता है तो अंशु, maybe आवाज बहुत some- कम आ रही है तुम्हारी, तुम्हारे पीछे के मेट्रो की आवाज ज्यादा आ रही है। मुंह को एकदम यहाँ पे रख दो माइक के, फिर बोलो। तो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। अच्छा, anybody else guys? नो सर, अभी इस पे वर्क करेंगे। सर वो पीएम के All right. लिए आप क्या कह रहे हैं स्वास्तिक? सर पीएम के लिए आप हाँ। हमसे अभी बात कर सकते हैं। पीएम के लिए यस सर। नहीं, इस मीटिंग में मत बात करो, आप पर्सनली अलग से बात कर दो ना, तो नेक्स्ट 2 मीटिंग्स